Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students. Now let's start with the first phylum of animal kingdom which is Porifera. तो अब हम बात करते हैं phylum Porifera की animal kingdom का first phylum है and we'll discuss about all the characteristics and we'll take some example of this phylum also. So let's start Porifera. When we talk about Porifera, the word Porifera means pore bearing. तो Porifera word का ही जो मतलब है वो है pore bearing. तो these are the animals which are pore bearing animals, यानी कि इनकी बॉडी में pores होते हैं. बॉडी जो है वो porous बॉडी होती है, pore से भरी हुई बॉडी है. This animals are members of this phylum Porifera are diploblastic. They are diploblastic. Means they have two germ layers. Diploblastic, asymmetrical. There is no symmetry present there, so they are asymmetrical. And when we talk about the level of organization, these are the multicellular organism. All animal kingdom members are multicellular, so they are also multicellular organism. But they are such a primitive type of organism which do not have any means particular level of organization. There the cells are aggregated in the different form. यानी कि cell aggregation level मिलता है जिसे हम बोलते हैं cellular level of organization. So level of organization is cellular level. Cells are present, but these cells are present in the form of aggregation. So that is known as cellular level organization. ये हुई जनरल बात. अब बात करते हैं इनके हैबिटेट के बारे में. Most of the members of these phylums are marine. They are marine and they are mostly they are marine, but there is one exception you should know, that is the Spongilla. Spongilla is the sponge which is freshwater sponge. It's known as freshwater sponge because it lives into the fresh water. All the members of these phylums is commonly known as sponges. हमने commonly sponge के नाम से जानते हैं. So they are commonly known as sponges. Sponge हम वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे इनके लिए. अब हम बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर की. बॉडी स्ट्रक्चर की जब हम बात करें बॉडी स्ट्रक्चर मीन्स हाउ द बॉडी इज फॉर्म, कैसे बॉडी बनी है. They are the sedimentary organism. Means they remain fixed at one place. They remain fixed at one place. This is the substratum where they remain fixed. Okay, now the body is porous body. Porous means in their body the pores are present. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी पूरी body में pores present होंगे. So let's make the pore. If we draw the structure will be like this. Their body is porous and the different pores are present there. These pores are present here. These pores are known as ostia. The term which we are using here for these pores is ostia. So these pores are ostia. Small pores which are present throughout their body is known as ostia. So ये भी एक ostia है. This is also an ostia. So these pores are known as ostia. Whereas a one big pore which is present at this side and work as a mouth, this mouth-like structure, a big pore जो यहाँ पे present है. This pore is known as osculum. Osculum. These are the smaller pores which are present all over the body. They are known as ostia. Water comes inside through these ostia. इन ostia से होता हुआ water जो है अंदर आता है, इन sponges के अंदर आता है, and then it's released out or it goes out from this larger pore-like structure that is osculum. Osculum से बाहर release हो जाएगा. The water that is coming inside, this water transportation system is known as canal system into the sponges. That is very important term. यहाँ पे जो water transportation से related system है, इस system को हम बोलते हैं canal system.
and this canal system has different types according to different sponges. That is not part of your syllabus, तो हम यहाँ पे types की बात नहीं कर रहे, but ये जो water transporting system है, it's known as canal system. In this canal system, we can say that water is transported inside the pores, and it is through this water coming or water current, it helps into the food gathering. फूड को गैदर करने में हेल्प कर रहा है, साथ में रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, एंड इट आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन. इस वाटर करंट के साथ फूड मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं, देन डाइजेशन हैपेंस इनटू द इंटरसेलुलर कंडीशन. यहाँ पे अंदर ये जो स्पेस है, इंटरनल स्पेस दैट इज लाइंड बाय दीज layers is known as spongocyl. इसे हम बोलेंगे spongocyl. So that is the spongocyl which is present here, and this spongocyl is lined by the specific cells. We'll talk about these cells also. Let's see what happened. जैसे ही पानी अंदर आ रहा है, water current जो अंदर आ रहा है, it is taking food molecules also. और microscopic जो marine organisms होते हैं, ये उन्हें food की तरह use करते हैं. They come inside, then digestion happens here into the spongocyls, and this type of digestion is known as intercellular digestion. तो यहाँ पे जो digestion है, वो intercellular digestion है. Cells के अंदर digestion हो रहा है, and after the digestion, the waste material or undigested food is released out through the osculum. Osculum के साथ बाहर release हो जाएगा. So this is about the canal system. Now we will talk about the spongocyl. This lining, this open cavity-like structure which is present in the center part. यहाँ पे center में जो हमें एक structure नजर आ रही है, this structure is known as spongocyl. इसे हम बोलते हैं spongocyl. This spongocyl is lined by some specific cells. This is spongocyl, and this spongocyl खाली जो कैविटी हमने बीच में बनाई है, इसे हम spongocyl बोल रहे हैं, and this spongocyl is lined by specific cells, and these cells are known as choanocytes. यहाँ पे let's take an enlarged view of this pores. ये जो pore का part हमें दिखाई दे रहा है, suppose इतना जो part है, अगर हम इसे enlarge करके देखें, इसे हम बड़ा करके देखें, तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके की structure हमें दिखाई देगी. This is the one part and this is the another, and middle part is the pore. यहाँ पे pore के बीच में जहाँ जो cells present होंगी, flat cells, these are known as pore cells, and the cells which are present at the outer surface, बाहर की तरफ जो cells present है, these cells are known as pinacoderm. These cells are known as pinacoderm, and this this layer of cells is known as pinacoderm, and this layer is made by the some cells which are known as pinacocytes. Name of these cells which are making this layer pinacoderm is known as pinacocytes. तो ये जो layer बनी है, outer layer जिसे हम pinacoderm कह रहे हैं, इस layer को form करने वाली cells हैं pinacocytes, and inside ये जो अंदर का part है, यहाँ पे अंदर spongocyl होगी. हमने इस चीज को enlarge किया है, तो यहाँ पे spongocyl present है, खाली space present है. Spongocyl is present here, and this spongocyl is lined by specific layer, and this layer is known as choanoderm. The term that we are using here is choanoderm, and this choanoderm is formed by specific cells which are known as choanocytes. The cells choanocytes, the cells which are making this layer choanoderm is choanocyte. अभी तक हमने क्या देखा है? This porifera, number of porifera are the pore bearing. पूरी body में pore present होते हैं. Smaller pores are known as ostia. One big pore is known as osculum, and inside between this empty space, this is known as spongocyl. अगर हम इसे enlarge करके देखें तो हमें कैसा structure दिखाई दे रही है? This is the outer layer, and this outer layer is known as pinacoderm. Outer layer को हम बोल रहे हैं pinacoderm. This pinacoderm is formed by specific cells which are known as pinacocytes, whereas this spongocyl is lined by the another layer of the cells. एक और cells की layer से covered होती है, and the name of the layer is choanoderm, and the cells which are making these choanoderms are known as choanocytes. उसे हम बोलेंगे choanocytes. अब हमने कहा कि ओस्टिया से वाटर अंदर आ रहा है और ऑस्कुलम से बाहर जा रहा है,
ऐसा क्या रीजन है कि ऑस्कुलम से ये वाटर बाहर जा रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ऑस्कुलम से अंदर आए? That is not possible. Reason is that कि हम कह रहे हैं कि कोएनोडर्म, this कोएनोडर्म is formed by the कोएनोसाइट्स। ये जो कोएनोसाइट्स होती हैं, इन कोएनोसाइट की स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी that they have such kind of structure, इनकी इस तरीके की स्ट्रक्चर है that they have flagella, फ्लास्क शेप ऐसी स्ट्रक्चर है और इनमें यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। Like this is the spongiocell. We are saying this coenoderm is lining the spongiocell. ये spongiocell को line कर रहा है यानी cover कर रहा है। तो actually में कहाँ present है? They are present here. These flagellated coenoderms they are present here and they are flagellated structure. इस तरीके से यहाँ पे present हुई। This is one coenocyte. This is another coenocyte. And they are present here with their flagella and their flagella move the water outside through the osculum. इसी की वजह से जो osculum से water बाहर निकलेगा वो इन्हीं coenocytes की flagella की movement से निकलेगा. So we can say that these coenocytes they help in the water transportation. They are covering or they are lining the spongiocell and the canal system. Canal system को भी line कर रही हैं और spongiocell को भी line कर रही हैं. These cells are known as coenocytes. That is very important term. You should keep remember the name of coenocytes and the pinacocytes. These are very important. Now this empty space this is filled by the mesoglea. Mesoglea से filled होगा and here the skeletal cells are also present. कुछ ना कुछ skeletal तो होगा, ऐसा नहीं है कि without skeletal system के ये organism बने होंगे. यहाँ पे कुछ skeletal structure भी present होगी. यहाँ पे जो skeletal होता है sponges के अंदर, पॉलीफेरा के मेंबर्स के अंदर skeletal दो चीजों से मिलके बना है. It could be present in the form of spicules. Spicules we can call it spicules, and it could be present in the form of spongin fiber. Spongin fibers. Skeletal system की अगर हम बात कर रहे हैं, it can be made up of spicules and it can be made up of spongin fibers. Spicules can be formed by the two different composition. दो तरीके के spicules हो सकते हैं. Spicules are the needle shaped structure. Needle shape हो सकती है, unbranched हो सकते हैं, और they can be branched. So these are the branched or unbranched needle shaped structures which are known as spicules. These spicules can be formed of calcium carbonate. कैल्शियम के बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हो सकते हैं. Then we call it calcareous spicules. अगर कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं, then we use the word calcareous spicules. And if the spicules are made up of silica, अगर सिलिका के बने हैं, then we call it siliceous spicules. Siliceous spicule. तो spicules यहाँ पे present होंगे जो कि इनका क्या बनाएंगे, skeletal system बनाने का काम करेंगे. And these spicules can be made up of spongin fiber or this कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका दोनों के बने हो सकते हैं. स्पॉन्जिन फाइबर जो बने हैं दैट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन प्रोटीन. ये स्पॉन्जिन प्रोटीन के बने होंगे. सॉफ्ट है ये स्ट्रक्चर एंड दिस इज द हार्ड स्ट्रक्चर. स्पिक्यूल्स आर द हार्ड स्ट्रक्चर. तो ये बात की हमने स्केलेटल सिस्टम की. नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन टू दैट स्ट्रक्चर. लेट्स टेक अ क्विक रिकैप. Pore-like structure, smaller pore ostia, bigger pore osculum, and between the cavity is known as spongiocell. इसे हम कह रहे हैं spongiocell. This spongiocell is lined by specific cells known as coenocytes, and these coenocytes make a layer of these cells which is known as coenoderm. Coenoderm कहलाएगी. And outer layer is known as pinacoderm. बाहर वाली layer को हम pinacoderm बोल रहे हैं. तो ये हमने थोड़ा सा सेल्स का बारे में आइडिया दिया है कि कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कीप रिमेंबर, जो हमें याद रखनी है, दैट दे हैव अ कैनाल सिस्टम. इसमें मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है. दे हैव कैनाल सिस्टम. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. आगे अब हम बात करते हैं अबाउट देयर रिप्रोडक्शन. इन द केस ऑफ स्पॉन्जेस द सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. स्पॉन्ज में सेक्स सेपरेट नहीं होते. मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर प्रेजेंट इन अ सेम बॉडी. एक ही स्पंज के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही बॉडी प्रेजेंट होती है, दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं. Such kind of condition is known as hermaphrodite. The condition, the name for this condition we use is known as hermaphrodite, in which the same body has the male sex organ and it has the female sex organ also. तो दोनों ही तरीके के सेक्सेस एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. रिप्रोडक्शन के टाइप की अगर हम बात करें, they have sexual as well as asexual reproduction. दोनों ही तरीके का रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होगा. रिप्रोडक्शन
they can reproduce by asexual or by sexual reproduction. Asexual reproduction is happened by different methods like budding. They can reproduce by budding. They can reproduce by fragmentation, or they can reproduce by the gemule formation. अभी gemmules क्या होते हैं? These gemmules are the specific structure which are formed during the unfavorable condition, and they germinate and give rise to new sponges when the conditions become normal. So this is the way by which they can reproduce asexual reproduction. अगर हम gemule की structure देखें, इनकी structure कुछ इस तरीके की होती है. This is the structure of gemule. यहाँ पे बहुत सारी cells present हैं. This is the opening. Last shape structure हो गई. And here the spicules are present. The skeleton जो हम बोल रहे हैं, these are present here. Okay. Now this structure is known as gemule. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि sponges जो होते हैं वो एक जगह पे फिक्स रहते हैं, सेसाइल्स रहते हैं, फिक्स है, सेडिमेंट्री हैं, एक जगह पे ही फिक्स है. तो वहीं पे रहते हुए अगर रिप्रोडक्शन करेंगे तो वहाँ पे ओवर क्राउडेड हो सकता है. सो दे अडॉप्ट सम टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि यहाँ पे जो इनके गैमेट्स बन रहे हैं, जो इनके लार्वीज बन रहे हैं, वो दूर जाए या कुछ ऐसे तरीके हो जहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए कहीं दूर मूव कर सके. तो उस केस में ये भी एक मेथड है जेम्यूल फॉर्मेशन भी. These gemmules are formed inside the body of sponges. Sponges की body के अंदर बनता है, and these gemmules are released from the sponge body. Sponge की body से release हो जाएगा, and release होने के बाद बहुत दूर जाके, काफी distance के बाद ये दूर जाके जहाँ इसे environmental condition favorable मिलती हैं, then these gemmules get germinate. ये germinate हो जाते हैं. अब germinate होगी new sponges कैसे बनाएंगे? Because they have some specific cells. These cells which are present in these gemmules, they are known as amoebocytes. The cells which are present in these gemmules are amoebocytes. And these cells are the totipotent cells. These amoebocytes are the totipotent cells. Totipotent word का क्या मतलब है? Totipotent का मतलब होता है कि cells which can be developed into any kind of these cells. This condition is known as totipotency, and these cells is known as totipotent cells. So these amoebocytes are the totipotent cells which can give rise to new sponges, new body को form करेंगे. So this is about the asexual reproduction. Budding से हो रहा है, fragmentation से हो रहा है, gemule formation से हो रहा है. These gemmules can be known as internal bud. इसे हम internal bud भी बोल सकते हैं. Okay. अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इट्स फॉर्म हैपेंड बाय द गैमेट फॉर्मेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा, एंड द फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. कॉइनोसाइट्स जो है स्पर्म्स को कैप्चर करेंगे एंड देन रिलीज इट टुवर्ड्स द ओवा. ओवा के पास रिलीज कर देंगे, पहुंचा देंगे, एंड देन फर्टिलाइजेशन हैपन. दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. And after internal fertilization, the larvae is formed. यहाँ पे जो larva का formation होगा, larvae formation होगा, and through larva formation they do their development. यानी कि जो reproduction हो रहा है वो direct नहीं हो रहा. यहाँ पे directly fertilization के बाद new sponges form नहीं हो रहे. पहले क्या form हो रहा है? पहले larva form हो रहा है, larvae form हो रहा है, and such kind of development is known as indirect development. Indirect development. So we can say that in the sponges development is indirect development. यहाँ पे indirect development है जिसमें larva बन रहा है, and these larvas are ciliated motile larva. जो parent body है sponges है वो एक जगह पे fix है, but जो larvas बन रहे हैं वो ciliated होते हैं, उनमें cilia present होती है. They are ciliated. characteristic की अगर हम बात करें, ciliated and motile larva यहाँ पे form होंगे जो कि मूव कर सकता है. ये मूव करते हुए डिस्टेंस कवर करेगा, एंड एट एनी अदर प्लेसेस इट विल रीच देयर, एंड देन इट गिव राइज टू न्यू स्पंज. एक न्यू स्पंज को फॉर्म करेगा. सो दिस इज अबाउट देयर रिप्रोडक्शन. दैट्स we discussed all important things related with the phylum Polyphera. Let's take a quick recap जो हमने रिप्रोडक्शन से रिलेटेड लिया है.
सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन है. बाय बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और gemule formation they can reproduce asexually. Gemmules are the specific structure which are formed in this way that it release from the parent body and they germinate and give rise to new sponges. They form gemmules are formed during unfavorable condition and they can remain in dormant stage. बहुत लंबे टाइम तक डॉर्मेंट स्टेज में रह सकते हैं. ये तब बाहर आएंगे या तभी जर्मिनेट होंगे जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं. The cells which are present here is amoebocyte cells, which are the totipotent cells. Sexual reproduction जो होता है, it happens by gamete formation. Sexes are not separate; they are hermaphrodite. Means both type के sexes जो है मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. Fertilization internal होगा. And after fertilization, larva is formed, and that type of development is known as indirect development. तो indirect development हो रहा है. Larva जो बन रहा है, larva is ciliated and motile larva. So that's all about the all important characteristics of sponges or phylum Porifera. Now let's take a look on some examples. These are the example of phylum Porifera. First, Cycon. You can see here. Cycon is there. Then Euspongilla and Spongilla. These are the some members of the phylum Porifera. This Euspongilla is also known as bath sponge. इसे bath sponge भी बोलते हैं. तो पहले के टाइम पे bathing के टाइम पे as a scrubber use किया जाता था. So that's why it's known as bath sponge. Whereas the Spongilla is known as freshwater sponge. Freshwater sponge हम इसलिए कह रहे हैं because all the sponges found into the marine water. This is the sponge which found into the fresh water. That's why the Spongilla is known as freshwater sponge. So this is about the example also. The study of the Porifera is known as parazoology. अगर हम इसकी बात करें, that is also a term. You can keep remember it. That is parazoology. The term which is related with the study of Porifera. So that's all about the phylum Porifera. In the next